Well, I'm at the banks of the Ghagra River, just about 50 kilometers away from Bahraich, where wolves have terrorized not one or two, but round about 30 villages. Wildlife experts and also the forest officers here believe that floods over a period of time involving the Ghagra River have actually altered the natural habitats of wolves, who usually live along the banks, live along in these areas surrounding the river. The reason is because there's easy access to water and prey whenever they're close to the river. Altering of natural habitats because of floods is what is leading to disruption in their normal lives as far as the wolves are concerned. Experts also believe that because of this there is heightened stress, and that's one of the reasons why wolves being displaced and stressed could be attacking animals. But there are other theories as well, including a revenge angle. रात भर डंडा लेके हम लोग दौड़ी थे रात भर सोई कहाँ है शासन भी दौड़त है मारा जाए चाहे पकड़ा जाए मार दी जाए तो वो बढ़िया बढ़िया का वो इतना परेशान किया जनता के न खेत को जाए पावो तो कोई. But how far will the bloodthirsty wolf go for revenge is the question that this young couple, Rakesh and Kajri, are asking. They have lost their 1.5-year-old baby to a wolf attack. This is the place of 2-year-old Pratibha, who was killed on the 27th of August by a wolf, taken away from the fields right from this particular spot, where the family was at about 2 or 3 in the morning is what they tell us. The wolf came exactly from this route where I am right now and dragged the child away. Just give you a sense of what the parents here are saying. These are the parents of Pratibha, the baby who was killed by the wolf. And just right here is what the parents are telling us. The wolf every single day, even after the attack, chooses this spot. This spot, takes this particular route is what they're telling us, and is seen here in the wee hours of the morning. Now, they have 2 children. One who's been killed by the wolf, and the second one they've sent away to their parents' house so that there is no second attack. The family members and the parents of the baby are distressed. ये बताइए राकेश जी, उस रात क्या हुआ? आपने कहा बच्चे को सवेरे ही उठा लिया था, बहुत ही सवेरे था, 2 या 3 बजे का समय था. जी वही 3:10 का समय था. मेरी बेटी ने पानी मांगा तो इसने घर से लेके आया, वहाँ पे बैठाल दिया, फिर नल ढारने लगी, उतनी देर में दबोच के ले गया भेड़िया. फिर तुरंत हमको आवाज मिली, इसने चिल्लाई, मैं तुरंत दौड़ा तो ये इस जगह पे दिखी, हमको पानी में जाता हुआ दिखा. फिर मैं दौड़ा तुरंत, लेकिन वो खुद सीधे भगा. तो फिर मैंने घर पे आया, टार्च लेके और डंडे लेके दौड़ा तो सीधे नहीं गया, वो भाग गया था दक्षिण की तरफ पे. तो मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं मिले. फिर सुबह वही जब मैंने पुलिस को फ़ोन की, जंगल विभाग को फ़ोन किया तो आए सब लोग. फिर उसके बाद में सुबह 6:30 बजे टाइम पे 1 किलोमीटर दूरी पे गन्ने में लाश मिली थी बेटी की. फिर वो जानवर भी दिखा, वो भागता हुआ भेड़िया भी दिखा, लेकिन उसको कोई पकड़ने के लिए प्रयास नहीं किया गया अभी. आप कहाँ थी जब ये हुआ? आप सो रहे थे, बच्चा भी सो रहा था? जी सो नहीं रहे थे जी, पानी लेने गए थे. बच्चा पानी मांगिस रहा तो लेके आ रहा, बाहर बैठा दिया रहा, पानी ले गए तैसे पता नहीं कहाँ बैठा उठा ले. राकेश जी, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि भेड़िया जो है वही भेड़िया यहाँ पर देखा जाता है? हाँ, वही भेड़िया आता है यहाँ पे, रोज का रोज आता है. तो आपने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बोला नहीं कि भेड़िया यहाँ पर देखा जाता है? मैंने बहुत बार बोला है, मैंने पेपर पे लिख के भी उनको एप्लीकेशन भी दिया हूँ. वहाँ औराही में रहते हैं टीम बना के, मैंने वहाँ दिन में जाकर मैंने हाथ जोड़ के विनती भी की, वहाँ सर मेरे यहाँ जाल लगवा दो कि किस तरह भेड़िया है यहाँ पे फंस जाए, हम लोग उसको आपको खबर कर देंगे, उसमें फंसा लेंगे. लेकिन यहाँ पे कोई जाल वाल व्यवस्था नहीं की जा रही है यहाँ पे. As night descends on Bahraich, so does the pall of gloom, of fear and of anxiety. What fills the air is warnings blaring from sound systems. These are the kind of warnings. Jaagte raho, savdhan, beware, be careful. Be careful of the fact that there is a wild animal, more than one, and that it's turned a man-eater. Do not sleep outside your houses. Do not make yourself vulnerable. Keep your children safe. Lock up the doors of the house. If you do not have doors, construct doors. These are the kind of warnings that is blaring across loudspeakers
These are members, workers of the forest department, villagers have come all together to help solve this problem, to warn the villagers, to help keep them safe. And all of them are telling us that things like these, warnings like these will continue over a period of time, given that the man-eater is still on the prowl, is still on the loose, and it's a big, big, big concern. Many residents, plagued by sleepless nights, have taken up arms with sticks to protect themselves and their families. This is night patrolling being done on a tractor where I am right now. All these people are villagers, the volunteers, they're helping out. They've been involved by the forest department, have been told that you have to get onto a tractor and let these announcements reach every nook and corner of all of these villages. On the left side of me are sugarcane fields where we see many of these wolves essentially hiding. They're able to camouflage themselves very well here. Look at the height of the grass, essentially, of the plant. Also, these are workers, and some of these are villagers, and many of them have been, in fact, working with the forest department as well. Let's get a sense from them about what is going on here. कितने देर रात तक यहाँ पर इस तरह से आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं? रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हम लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कितने दिन तक ये चलेगा? आपको क्या लगता है, इससे क्या भेड़िया डर जाता है या लोगों पे अवेयरनेस पहुंचती है कि वो जान जाते हैं कि इस तरीके से बाहर नहीं सोना? आवाज आती है तो गांव वाले भी जग जाते हैं और आवाज से भेड़िया भी डर के खेतों में भग जाता है। इसीलिए हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं रेडियो के साथ में। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कोई फिक्स नहीं है मैम, जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये पेट्रोलिंग चलती रहेगी। जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तब तक पेट्रोलिंग चलेगी, which means that this is pretty indefinite is what it looks like at this point in time, given that there's been some success in capturing some wolves, but nobody knows whether those were the wolves. The captured ones are the ones who have killed the children, or the man-eater, or maybe more than one man-eater. Maybe quite a few man-eaters are right out there who are on the prowl.